Hello everyone. Thank you for joining this PPT. So today we'll be explaining on. We'll talk about decoding wealth creation opportunities in freight rolling stock, which is known as railway wagons. So now moving on to the first slide. So as you can see in this chart, we have depicted two charts, which one is indicating the Indian Railways revenue trend from FY14 to FY24, and second is the budgetary allocation trend, which is from FY14 to FY25. So on the left-hand side of the chart, you can see the railways revenue has been growing at a CAGR of 6.4% from 1.4 trillion rupees to 2.6 trillion rupees. In the same way, the budgetary allocation has also increased to 2.6 trillion in FY25, which is the highest ever allocation from the government. And the BJP coming into retaining its power will be an add-on, because this will give the boost to the railway wagons sector. Moving on to the second slide. So over here, as you can see over here, we have given the revenue breakup of the of the railways. So 67% of the revenue is derived from the freight, 26% of revenue is derived from passenger, and other is miscellaneous. Now moving on to the third slide. So over here, we have showed that what is the annual traffic across all modes of transport. So all modes of transport includes airways, seaways, roads, and railways. So as you can see, FY24, it stood at 1,588 million tons. And now this is expected to increase to 3,600 million tons by FY30. So which is a CAGR of 14.6%. In this particular slide, we can see, as we are talking the share of the railways, which was 27%. So that is around 27% in FY24, which is around 429 million tons. So we've just calculated the backslide, and this is going to increase to 1,620 million tons by FY30, which is having a 45% share of railways in all the mode of transport. So this is growing at a CAGR of 24.8%. Now moving to the next slide. Over here, as you can see, the wagon demand in FY22 was around 3 lakh tons. So this stood at 3 lakh tons, and now this is going to increase to 5.4 lakh tons, 5.4 lakh units, and this is a CAGR of 10.3%. So if you see, the incremental 2.5 lakh units is going to come over the next 5 to 6 years. So this incremental 2.5 lakh units provides an opportunity size of 1 lakh, or approx around 1 lakh crores. But to be on a very conservative side, and if you go on to 50% of the revenue or 50% of the demand, so this will translate into 1 to 1.2 lakh tons incremental wagons, which will provide an opportunity of around 40,000 crores. So which is a massive amount. And the players which are into the freight rolling stock are the following three, which is the Titagar, then you have Texmaco, and then the third one you have is Jupiter Wagons. Now let us explain. Let us understand the procurement policy of the Indian Railways. So this is a stepwise process, where the first step is the Indian Railways, they check upon their inventory, and depending on their inventory, they open the tenders. Second step, you have the vendors bidding for the offers, and then the third step, the Indian Railways, they evaluate and rank the bidders, and where they are divided into L1 and L2 bidders. So over here, there are more two processes involved. One is the development order, and second is the bulk order. In development order, depending on the credibility of the party or the vendor, the Indian Railways procure around, allowed to procure around 20% of the total orders. And in the bulk orders, they are given the 100% bulk orders. And then moving on to the splitting of quantities, where if the L1 bidder who had been allotted the development orders up to 20% is not able to meet its requirement, so they that the deficit will be met by the L2 bidders. And the next process involves where the L1 and L2 bidders have been given the differential rates, and the orders is placed. After the whole stepwise process, you have the review, where both the Indian Railways and the vendors, they both will review the terms and agreement, and then the payment terms are finalized.
Now moving on to the next slide. Over here, we've been discussing on the types of freight rolling stock, where you have various wagons, like you have flat wagons, you have tank wagons, you have box wagons. So these are the different types of wagons, which is used for different types of the industries. So if you have defense industries, so the particular wagon is being used. Then you have pharma, or you have the coal industry, so where different types of wagons will be used for the coal sector. So these are the following types of wagons which are used in the freight rolling stock. And the average realization of these wagons is around 37.5 lakh rupees to 40 lakh rupees, and it varies according to the wagons. Suppose if you have a specialized wagon, which is the if you say the defense wagon, or if you are having the oil and gas wagon, so that has an incremental amount of money which is around 40 plus lakh tons of rupees. Just a minute. Yeah. So here you have different types of wagons where, like I mentioned, you have around 35 lakh to 40 lakh rupees of per rupees wagon. Now moving on to the components of freight rolling stock. Over here, these are the components which are used in the locomotives or the wagons. Like you can see, you have the forged wheel set, you have the cars, bogies, you have couplers, draft gears, loco shells, CMS crossings. So the key players which are there in these components are Titagar, Jupiter, and Texmaco, as we have earlier discussed. If you see the forge wheel set, so this component is entirely import dependent. Like India is not into the forge wheel set, and we completely import it from import. And but now we'll be talking on that in detail in the later slides, where we'll be talking about the Titagar and Jupiter wagons, where we'll cover the rest of the forge wheel set pointers. Moving on to the next slide. So these are the key components of the passenger and freight rolling stock, where you have Cosmic CRF, which is a listed company, and it provides the cold roll formed items, where you have the sheet which is being used in the locomotives and wagons. Then you have Frontier Springs, which is into both freight and passenger rolling stock, where the springs are being used in the locomotive and wagons. And you have Oriental Rail Infra, which provides the infrastructure inside the wagon. So these are the three key main players in the PRS and FRS segment. Yeah. Now moving on to the next slide. Over here, we'll be talking about the passenger rolling stock. So earlier we had discussed on the freight rolling stock. Now we'll be discussing on the passenger rolling stock. So यहाँ पे, as you can see, Vande Bharat और Metro दोनों growth driver है, which will be a massive growth driver for the passenger rolling stock. So the government of India has aimed to launch around 400 Vande Bharat trains over the next 3 to 4 years, and इसका जो opportunity size है वो करीब 50,000 करोड़ रहेगा, and depending on the other various Vande Bharat, it will vary from 50,000 to 60,000 crores. So this is a massive growth potential for the companies who are in passenger rolling stock. So you have two companies, listed companies. One is Titagar Rail, and second you have is BEML. And the next growth driver, as you can see, we have the Metro, where the government is planning to increase the network more than twice to 1,700 kilometers over the next 3 to 4 years. And this will require an incremental 2,000 to 2,500 metro rail coaches over the next 4 to 5 years. And this and other railways, new trains will be also be added around 200 to 250, which will be apart from the Vande Bharat trains. So these are the main two growth drivers for the passenger rolling stock. Now moving on to the next slide. So here we'll discuss about the companies who are majorly into the freight rolling stock. So first we have Titagar. So this company is present in both freight rolling stock and passenger rolling stock. So this company is the leader in terms of market share, where it provides both diverse requirements of the passenger and freight rolling stock. And the main growth drivers for this company are three. So first one we'll talk about is the Ramakrishna Forgings Limited and the Titagar Rail System Consortium. So over here, this both company has entered into an agreement, and they will manufacture and supply around 15,40,000 forged wheels over next 20 years under the Atmanirbhar Bharat initiative by the Ministry of Railways. And the total order contract value is approximately 12,226 crores, and the Titagar's share of JV is standing at around 47%.
And this, they will, so over here, the capacity built up will be around 2,20,000 wheels per annum. And one wheel set is, it ranges from 2.75 lakhs to 3.35 lakhs in the normal rail. And in the Vande Bharat, the forged wheels ranges from 6 to 8 lakh rupees per wheel set. And in over here, this both companies will equally, infuse around 1,250 to 1,500 crores of capex, which is around 2,500 crores of capex. So this is the major growth driver for the Titagarh rail system. Second one we have is the BHEL and Titagarh rail system consortium. Over there, these both companies have entered into a contract, and they will manufacture and supply around 80 fully assembled Vande Bharat sleeper trains by FY29. And they have also achieved the maintenance contract for the next 35 years. The total estimated value is around 24,000 crores. So, and this train will have around 16 coaches, and with the approx capacity of 880 passenger trains, 880 passengers, and the speed of the train will be around 160 kilometers per hour. So this will also provide a substantial revenue growth for Titagarh rail system. The next growth driver for the companies, the PRS segment, which is the passenger rolling stock. So currently, the company has is earning around 500 crores of revenue per year, and now this is significantly going to increase. So the current split of revenue between FRS and PRS in Titagarh is 85:15. So this is going to split to 50:50 over the next 3 to 5 years. And over here, you'll see a substantial run-up in this segment. And the company currently produces around 15 to 20 coaches per month, which will, in the next 1.5 year, will jump up to 30 to 40 coaches per month. And with Vande Bharat fully coming into online, so that will increase up to 70 coaches per month. So if you just calculate for the next 5 years, you will have a roughly 800 coaches per year, and one coach cost of around 10 crores, which will give you around 800 coaches into 10 crores, giving into 8,000 crores of revenue for the next 5 years for Titagarh. So this will be the massive growth driver for the next 3 to 4 years. Next, you have is Jupiter Wagons. So this company is fully into freight rolling stock and its key components. So talking about its growth drivers, first you have is Bonatrans. So the company has been integrating its operation to strategic acquisition, and here the company has acquired Bonatrans, where it has entered into the making of forged wheels. As we had earlier discussed, these forged wheels are completely imported, and India does not manufacture a single % of forged wheels. So over here, Jupiter has also entered into a consortium with Bonatrans, and the company is going to do a capex of 2,500 crores, where it will be producing around 1 lakh wheel sets by CY27. So this will help to enhance the revenue of the company from 600 crores in FY25 to 4,000 crores from this particular segment, reaching the total revenue potential to 10,000 crores by FY27 for Jupiter Wagons, which is currently placed at 3,500 crores, so which is almost 2.5 to 3 times of revenue in the next 4 years. And the third main growth driver is the braking system, the braking business, where the company has entered into JVs. So one is the DACO JV, and the second is the Covis JV. And currently, the company is expecting to contribute around 200 to 250 crores for the FY25, and it is expected to increase up to 4 times to 1,000 crores in the next 3 to 4 years. So this particular business is also going to ramp up in massive trajectory. Then moving on to the third slide and the third company, you have Texmaco Rail and Engineering. So this company is also involved, in the freight rolling stock, where it produces wagon, coaches, loco shells, and the key components pertaining to it. So the main growth driver of the company is the recent acquisition of the Jindal Rail and Infrastructure. So currently, the company has acquired this company, which is Jindal Rail and Infra, at 614 crores in September, and the transaction had represented an EV by EBITDA of around 8.1x. So
the company, it has a current capacity of 10,000 wagons, but having JRIL into place, it will add another 2,000 wagons per year. So this will have the same capacity of the Jupiter and Titagar with Jindal with Texmaco up to 12,000. Then the second point you have is the leading exporter. So the company is the leading exporter of railway castings from India. So it has a track record and it has exported around 550 plus freight cars to international markets over the next 10 years. And it supplies to international markets, and it also benefits from any geopolitical shift in the supply chains. And the third point, the growth driver you have is the strategic and technology-based partnership, where the company has entered into 4 JVs with Tuvax, Nimewag, Wabtec, and Sahara. And this basically, the 4 JVs are mainly into braking system and components. And Sahara Asia, which is one of the JV, it manufactures passenger coach railway interiors. So this can also be a major growth driver for the company going ahead. Now moving on to the key risk, where you have the following pointers could be harmful for this wagon industry. So any slowdown in the railway capex, or any slowdown from the tendering of the Indian Railways, or rolling out of tenders from the Indian Railways, and the higher competitive intensity bidding. So these are the key risks which the company may face, the following companies. Now, moving on to the next slide, where you have the earnings trend. So if you look, we have given the net sales, PAT, EBITDA margin, and ROE. So if you see the net sales CAGR, Titagar, Jupiter, and Texmaco all have grown at a CAGR of more than 50%, except Texmaco. But you can see this is a healthy CAGR growth of sales. And if you look at the PAT growth from FY22 to FY24, the highest is in Jupiter Wagons, giving a PAT CAGR growth of 158%, followed by Texmaco Rail by 132%, and Titagar Rail having 96.6%. And talking about the freight railway wagon, the industry, the highest margin profile stands around 12.5 to 15%, depending on the wagons. So that is the peak EBITDA margin which you can achieve, where Jupiter Wagon is currently the industry leader in the EBITDA margin. As you can see in FY24, it had clocked an EBITDA margin of 13.5%, and it has aimed to move ahead to 15% once it is fully backward integrated. And looking at the ROE, as you can see, once the tendering process had been started, the company was allotted many various orders of wagons. You can see the returns increasing with directly proportionate with the return on equity. As you can see, the Titagar Rail System ROE has increased from 8.8% to 12.9%. Jupiter Wagons increasing from 7.3 to 20.6%, and Texmaco increasing from 1.6% to 4.5%. Now looking onto the forward estimates, like you can see, we've provided the net sales and PAT FY24 to FY26 numbers, where all the 3 companies are having a healthy CAGR growth, is likely to achieve a healthy CAGR growth of 25% plus, followed by PAT CAGR of more than 30%, where Texmaco is substantially going to increase on back of the recent acquisition and the demerger process going on of his rail energy company. And as you can see, the ROE is increasing from 12.9% to 17.7% in Titagar, and the Texmaco is having expansion of more than 500 basis points from 4.5% to 11.6%. So these were the forward-looking estimates of the 3 companies. Now, looking at the operational highlights. So here we've provided the existing capacity wagons of the following 3 companies. So all the 3 companies are placed at 10,000 wagons per annum, and these are proposed to increase to 12,000 by the 4Q of FY25, and the whole implementation will start from 1Q FY26, where we will see all the 3 companies achieving on an average of 12,000 wagons per annum, which will eventually increase their earnings and PAT growth. Over here, we've also provided the order book in terms of volume and in rupees crore of the following 3 companies. So Titagar and Texmaco both have a order book wagons in volume terms of 14,000 plus, with the following, and the order book in crores. You can see Titagar has the highest order book of 25,000 crores.
And then, as you can see, the order books by sales as per FY24 stands at 7.3 times for Titagar, followed by 2.3 times of Texmaco and 1.9 times of Jupiter Wagon. And the second table below, we have given the trend, like in the recent 2Q FY25, the following companies that produce the following wagons per month. As you can see, Titagar on an average basis had produced 890 wagons per month, followed by Texmaco 800 wagons per month, and Jupiter at 710 wagons per month. And this all three are proposed to ramp up to around 1,000 wagons per month in the next year, followed from 1Q FY26. Yeah, so that was all. Yeah, Harsh, before proceeding for Q&A, I think there is some request to talk in Hindi. हिंदी में कुछ लोगों की डिमांड है, तो आप पहले स्लाइड पे जाइए. मैं थोड़ा फास्ट अगले 5 मिनट में जो भी हमारा डिस्कशन हुआ, आपने जो समझाया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. तो ये जो पहला स्लाइड है, अगर आपने देखा होगा कि जो बेसिकली इंडियन रेलवेज का जो इनकम है, रेवेन्यू हम जिसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ट है वो बता रहा है. और ये एक चार्ट दिखाता है कि जो इंडियन रेलवेज की जो आमदनी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है. अगर आप कोविड के बाद देखेंगे, FY21 में 1.4 ट्रिलियन रुपीज, 1.4 ट्रिलियन रुपीज का मतलब होता है कि 1,40,000 करोड़ रुपए कंपनी की आमदनी थी 2021 में, जो बढ़ करके तकरीबन 2.5 लाख करोड़ की हो गई. और एट द सेम टाइम अगर आप राइट हैंड साइड का चार्ट देखेंगे, बजटरी एलोकेशन, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कितना बजट एलोकेट होता है स्पेंड करने के लिए रेलवे में. तो अगर आप देखेंगे FY22 में ये जो अमाउंट था वो तकरीबन 1.1 लाख करोड़ का था, और ये बढ़ करके अब 2.5 लाख करोड़ के ऊपर FY25 में हो चुका है. तो जब रेलवे एज अ डिपार्टमेंट की जब आमदनी अच्छी होगी, उसका स्पेंड अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली ये सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनीज हैं, जैसे टिकटिंग कंपनी लाइक IRCTC, या फॉर दैट मैटर रेलवे वैगन कंपनीज, या फॉर दैट मैटर पैसेंजर को जो लेके जाते हैं वो वैगन हो गए, मेट्रो हो गए, तो अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि रेलवे में केपेक्स चल रहा है, और ये केपेक्स को सपोर्ट करने के लिए जो फंड्स है रेलवे के पास अवेलेबल है. हर्ष, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बेसिकली जो रेलवे की जो आमदनी है प्रीडोमिनेंटली अगर आप देखेंगे, तो उसका जो ब्रेकअप है, फ्रेट जो होता है, जो कि बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज हम जिसे कहते हैं, जो माल जो रेलवे की जो बोगीज है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेके जाती है, मोस्ट ऑफ द आमदनी जो है 67% रेलवे की वहां से आती है. और उसके बाद जो दूसरी बड़ी आमदनी है टिकटिंग रेवेन्यू से आती है. जैसे आप और मैं जब हम टिकट बुक करते हैं तो रेलवे को उसके जो आमदनी है वो तकरीबन 26% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. हर्ष, नेक्स्ट स्लाइड. अब हम ये देखेंगे कि इंडिया में जो टोटल जो माल है वो कितना एनुअली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. तो अगर आप 2024 का साल का बाद देखेंगे तो तकरीबन 1600 मिलियन टन का जो माल है अक्रॉस ऑल द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेके जाया जाता है. इसका मतलब जब मैं ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलता हूँ, इसमें रेलवेज आ गया, रोडवेज आ गया. रोडवेज मतलब जो ट्रक के थ्रू माल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाता है. शिपिंग आ गया, शिपिंग में के थ्रू जो माल जाता है. एयरलाइंस के थ्रू जो माल जाता है. तो तकरीबन 1600 टन मिलियन टन का जो माल है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसपोर्ट किया जाता है. और एक इकोनॉमी जब हमारी स्केल अप होगी तो FY30 में ये जो है ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ करके 3600 मिलियन टन हो जाएगा, जो कि एक 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को दर्शाता है. अब हमें ये देखना होगा कि जब ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 15% की दर से ग्रो होगा अगले 5-6 सालों में, तो इसमें रेलवे की क्या भूमिका होगी, जो हम अगले स्लाइड पर देखेंगे. तो अगर आप देखेंगे कि रेलवेज की जो भूमिका है इसमें, अगर FY24 देखते हैं 2024 में रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन था तक 27% था ओवरऑल इसमें ट्रांसपोर्ट में, जो कि 429 मिलियन टन था. अगर आपको याद होगा पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि FY24 में तकरीबन 1600 मिलियन टन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ओवरऑल लोड के टर्म्स में, उसमें से रेलवे का शेयर 27% है, जो कि तकरीबन 400 मिलियन टन का आता है. और FY30 में ये जो रेलवे का जो शेयर है
वो तकरीबन 3000 जो टन हमने देखा था उसमें से बढ़ करके ये हो जाएगा 45%, जो कि दर्शाता है कि जो 450 मिलियन टन के आसपास का अभी का जो कंट्रीब्यूशन है ये बढ़ करके 1600 मिलियन टन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेलवे के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसकी जो ग्रोथ रहेगी ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ से ज्यादा रहेगी, 25% के घर से रहेगी। अब जब रेलवे से माल जब ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा तो इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली बोगीज लगेगी, वैगन लगेंगे, और इसी को अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमने ये जो थीम है आज इसी को चूज किया है आपके सामने रखने के लिए। और इसमें बेसिकली 3 ही कंपनी है आज के डेट में, जुपिटर वैगन, टिटागढ़ वैगन और टेक्समैको। जिस तरह से हर्ष ने समझा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है काफी बड़ी है, ये तीनों कंपनीज की में इसका बेनिफिट हम आते देखेंगे अगले 3 सालों में। हर्ष नेक्स्ट स्लाइड लिया। तो जिस तरह से हमने देखा कि जो रेलवे के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा वो काफी एग्रेसिवली ग्रो होगा 25% के घर से। तो अगर आप देखेंगे जो वैगन की जो डिमांड है आज के डेट में 3 लाख वैगन है, जो अगेन ये जो आंकड़े हैं ये कंपनी के बताए हुए आंकड़े हैं। जैसे हम टिटागढ़ वैगन, जुपिटर और टेक्समैको की मैनेजमेंट से बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि आज इंडिया में तकरीबन 3 लाख वैगन आज दौड़ रहे हैं रेलवे पटरी पर। ये बढ़कर के तकरीबन 5.5 लाख वैगन हो जाएंगे FY 2030-31 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेलवे वैगन की जो डिमांड है तकरीबन 2.5 लाख वैगन एक्स्ट्रा लगेंगे। बट अगर मैं ये मान लेता हूँ कि आगे जाकर के कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है उसका 50% भी अगर गवर्नमेंट अचीव कर लेती है तो तकरीबन 1.25 लाख वैगन की इंक्रीमेंटल डिमांड आएगी। और अगर मैं इसे वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ तो एक वैगन की एवरेज कीमत होती है 40 लाख रुपए। तो उसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है 35,000 से 40,000 करोड़ का पोटेंशियल है। नेक्स्ट स्लाइड। ये ऑलरेडी हर्ष ने एक्सप्लेन किया, मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहूंगा कि कैसे रेलवे का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है। बेसिकली इसका टेंडरिंग प्रोसेस जहां ये दोनों तीनों कंपनीज बिड करती हैं और बिड के थ्रू इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये अलग अलग टाइप के वैगन है जो ऑलरेडी हर्ष ने कवर कर लिए हैं, आई मीन जो कि सभी कंपनीज बनाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेट रोलिंग स्टॉक। तो बेसिकली ये जो तीनों कंपनीज है ये सभी कंपोनेंट बनाती है प्रीडोमिनेंटली, और ये अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ी है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन इसके अलावा और 2 कंपनी है छोटी जो प्रीडोमिनेंटली ये जो पूरी थीम है रेलवे वैगन की उससे बेनिफिट करेगी। एक है कॉस्मिक CRF और एक फ्रंटियर स्प्रिंग। एट द सेम टाइम ओरिएंटल रेल इंफ्रा जो कि जो पैसेंजर बोगी होती है उसमें जो इंटीरियर होता है उसके कुछ कंपोनेंट ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्लाइड। जिस तरह से हमने देखा कि फ्रेट वैगन में काफी अच्छी डिमांड है, ये जो कंपनीज हैं तीनों कंपनीज इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक होते हैं जैसे वंदे भारत की बोगी हो गई या मेट्रो की बोगीज हो गई, उनमें भी इन्होंने अब अपना कामकाज स्टार्ट किया है। और इसी के चलते हर्ष ने एक्सप्लेन किया कि जो अपॉर्चुनिटी है 40,000 करोड़ की वैगन साइड में, उसी तरह जो वंदे भारत की बोगी है उसमें जो अपॉर्चुनिटी है तकरीबन 50 से 60,000 करोड़ रुपए की वहां पर भी है। और एट द सेम टाइम जो मेट्रो की जो लाइन है जो तकरीबन अगले 3 से 4 सालों में दुगना होगी, वहां भी ये सब दोनों प्लेयर्स को एडवांटेज होते दिखेगा। तो एक मन में एक डाउट होता है कि अभी जो एक्सपेंशन चल रहा है फ्रेट वैगन का वो आगे जाके 3-4 साल में जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये जो तीनों कंपनीज हैं इनमें ग्रोथ कैसे आएगी, राइट। तो ये जो ग्रोथ है ये जारी रखने के लिए इन्होंने एक अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है जहाँ पैसेंजर साइड में जहाँ कंटिन्यूस ग्रोथ रहती है। ग्रोथ 2 तरह से आती है, एक है आप नए बोगी आप इंट्रोड्यूस करते हो और एक दूसरी होती है कि आपकी एग्जिस्टिंग जो बोगी है 25 साल पुरानी 20 साल पुरानी आप उन्हें अपग्रेड करते हो नॉन AC टू AC, या जो पुरानी हो गई है वेयर एंड टेयर के कारण आप उन्हें पूरी रिप्लेस कर देते हो। तो जो पैसेंजर साइड में रिप्लेसमेंट का साइकिल है वो थोड़ा फास्ट होता है और इसी के चलते ये तीनों प्लेयर्स ने अपना जो बिजनेस है कारोबार है ये नए सेगमेंट में फोरे किया है। तो अगर मुझे अगले 5 से 10 साल का व्यू लेना होगा तो मुझे लगता है कि दोनों तीनों कंपनी में अच्छी ग्रोथ हम आगे जा करके देखेंगे। पहले के कुछ 2-3 सालों में ग्रोथ जो है फ्रेट के थ्रू ड्राइव करेगी और अगर उसके बाद जो है वंदे भारत और मेट्रो के थ्रू भी इन्हें कारोबार आते हुए दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड।
अगेन ये जो तीनों कंपनीज है हर्ष ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, मैं इसके ऊपर ज्यादा समय बिताना नहीं चाहूंगा। हर्ष, अब आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द स्लाइड जहां हमने आगे के जो फोरकास्टेड नंबर हैं वो स्लाइड बताइए आप। हाँ, तो बेसिकली ये जो स्लाइड है ये दर्शाती है कि जो तीनों कंपनीज है टिटागढ़, जुपिटर और टेक्नाको, अगर आप ये स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो पहले जो 3 कॉलम है वो ये दिखा रहे हैं कि जो कंपनी की जो सेल्स है, आमदनी है, वो FY24 से 26 के पीरियड में तकरीबन 25 से 30% से ग्रो हो रही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर। और अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे जो कि उसका नेक्स्ट कॉलम है, प्रॉफिट की ग्रोथ जो है सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, और इसका कारण ये है कि जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, ज्यादा प्रोडक्शन से जो इनके ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट नहीं मिलती है, तो उसके चलते जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक्सपेंड होते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, टिटागढ़ में, जुपिटर में तकरीबन 30-35% की प्रॉफिट ग्रोथ अगले 2 सालों में आएगी, और टेक्नाको को देखेंगे तो 75% की प्रॉफिट ग्रोथ अगले 2 सालों में हम आते देखेंगे। और इसी के चलते इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इक्विटी इन्वेस्टर के लिए, उसमें भी हम एक्सपेंशन होते देखेंगे। टिटागढ़ में हम देख रहे हैं कि FY24 में 13% की ROE है, ये एक्सपेंड होकर के 15% नेक्स्ट ईयर होगी, और FY26 में 18% हो जाएगी। टेक्नाको में 4.5% से 12% होगी, और जुपिटर में 20% से 18% के बीच में मेंटेन रहेगी। तो ओवरऑल जो ग्रोथ आउटलुक है तीनों कंपनीज का काफी बेहतर है अगले 2 से 3 सालों के लिए। और एट द सेम टाइम दिस विल बी ड्रिवन बाय द रोबस्ट ऑर्डर बुक। इनकी जो ऑर्डर बुक है काफी रोबस्ट है, जो हर्ष ने ऑलरेडी डिक्लेयर करी है। तीनों की कैपेसिटी तकरीबन 10,000 वैगन बनाने की है सालाना, और एट द सेम टाइम जो ऑर्डर बुक है वो जो उनकी कैपेसिटी है उसको मैच, उससे इनफैक्ट काफी ज्यादा है। तो अगले 2 से 3 साल की काफी रोबस्ट विजिबिलिटी है, और इसी के चलते हमें ये दोनों तीनों कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी लगती हैं। टिटागढ़ रेल को हमने हमारे दिवाली पिक में भी रिकमेंड किया था विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1500 to 1600 रुपीज, और ये कॉल हमारी ऐप में ओपन भी है। तो आई थिंक जिन जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हिंदी में थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन समझाए, आई थिंक आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। मैंने कोशिश की कि आपको हिंदी में भी ये प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करूं। अब नाउ वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर Q&A। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, एंड देन वी कैन हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के। किसी का कोई सवाल होगा तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम उसे आपका जो सवाल रहेगा उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट, तो पहला क्वेश्चन विवेक जी की ओर से है, आर देयर एनी एंसिलरी कंपनीज इन दिस? हर्ष वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन, इज देयर एनी एंसिलरी कंपनी व्हिच इज अवेलेबल ऑन द रेलवे साइड? या सो यू डू हैव एंसिलरी कंपनीज, जैसे हमने पहले भी बात की थी। यू हैव कॉस्मिक CRF, यू हैव फ्रंटियर स्प्रिंग्स एंड यू हैव ओरिएंटल रेल इंफ्रा। सो ये तीनों कंपनीज की कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है दोनों सेगमेंट को, जो PRS और FRS है। अभी देखा जाए तो फ्रंटियर स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, जो काफ़ी लोकोमोटिव्स में यूज की जाती है। एंड यू हैव ओरिएंटल रेल, जो अंदर का पूरा बॉडी, लाइक जो भी वैगन्स का अंदर का पैसेंजर के लिए है, वो इट क्रिएट्स दैट। सो यू हैव द फॉलोइंग 3 कंपनीज विच यू कैन take into consideration. So you have Cosmic CRF, you have the second is first is Cosmic CRF, second is one second, Frontier Springs. You have Cosmic CRF, Frontier Springs and Oriental Rail. Yeah, so moving on to next question from Subha Deepa ji, how to select stock for swing trading? Shubha ji, I think for this topic right now we both are from a fundamental team,
and I will request you to join our technical and derivatives webinar. I think they are the right person to answer on this question. I think बट एक मैं सीधा सीधा एक आंसर देना चाहूंगा कि आप जब भी कोई स्टॉक सिलेक्ट करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आपको ये देखना होगा कि वो जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर से होना चाहिए. केस इन पॉइंट जैसे अगर आप देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों से होटल्स कंपनी के जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं. पिछले 2-4 दिनों से महाराष्ट्र इलेक्शन के आउटकम के बाद हमने देखा कि रेलवे, डिफेंस, गवर्नमेंट कंपनीज के स्टॉक में कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है. तो बेसिकली जो सेक्टर या जो स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है कंपेयर टू निफ्टी या बेंचमार्क इंडेक्स, वो वही सेक्टर में आप स्टिक कीजिए. और स्विंग ट्रेडिंग जो है जहां से रिवर्स होता है उसमें आप कैप्चर कीजिए. और रही इसकी मेथड की बात की कैसे स्विंग ट्रेडिंग में कौन से पैरामीटर देखना चाहिए, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी के जो हमारे वेबिनार्स होते हैं टेक्निकल या डेरिवेटिव्स के, आप उसके थ्रू पार्टिसिपेट कीजिए. The next question is from Siddharth ji. Any mutual fund that invest in this sector? Yeah, good to see you back, Siddharth ji, on this webinar, and thanks for attending our webinar on a regular basis. So Siddharth ji, since this sector is a very small, in terms of especially a railway wagon sector, so there is no dedicated mutual fund or any scheme which is catering to railway as a theme. But I think there are many institutions which are a part of this shareholding pattern. Harsh, if you can check on the screener, I mean, which are the various institutions which are present in all these three companies, and or the name of the mutual fund which are holding stock in this all these three companies. So just if I can see, HDFC large and mid-cap fund is holding 3.5% stake in Titagarh Wagon. At the same time, ICICI Prudential Life Insurance, again it's a life insurance fund. HSBC Aggressive Hybrid Fund is holding 1% stake in this company. Motilal Oswal Large and Mid Cap Fund is holding 1%. Franklin Multi Cap Fund is holding. तो सिद्धार्थ जी, ऐसा कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड नहीं है डेडिकेटेड और एनी स्कीम जो रेलवे थीम को पार्टिसिपेट कर रही है. आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ मेनी लार्ज म्यूचुअल फंड. तो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. The next question is from Vivek ji. How long we can hold this long term 10-year plus? तो विवेक जी, as of now 10 साल का इतना बड़ा लंबा horizon view किसी का नहीं होता है. But looking at an order book, looking at a robust growth trajectory prospect, अभी जो हम ये स्टॉक है अगले 2 से 3 साल के एंगल से रिकमेंड कर रहे हैं. और जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है अगले 12 से 18 महीने में या 24 महीने में 30 से 50% की जो रिटर्न है एवरेज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 18 से 24 महीने में. So next question is from Mohammad Hussain ji. What about Ircon? Again, Ircon is and more of an EPC company rather than railway wagon. So Ircon की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि सभी रेलवे स्टॉक्स में एक मोमेंटम आया हुआ है. So I would recommend you to remain invested in Ircon, but again don't expect a significant rally from here on. गवर्नमेंट की जो ऑर्डर है थोड़े स्लो डाउन हुए हैं रेलवे साइड में. अगर यहाँ से ऑर्डर फिर से जो ऑर्डरिंग जो है गवर्नमेंट की ओर से बढ़ती है तो हम एक रैली इरकॉन में भी आते हुए देख सकते हैं. Then next question is from Amit Chatterjee of future prospects of right. Again जिस तरह से हम इरकॉन के लिए बात कर रहे थे सेम लॉजिक में राइट्स और आरवीएनएल के लिए भी लगाना चाहूंगा कि अल्टीमेटली ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेसेस हैं. ये बेसिकली इनका जो काम है ये है कि दे आर एन ईपीसी कंपनी. बेसिकली ऑर्डर मिलने के बाद रेलवे का ट्रैक लेइंग का जो काम होता है, बेसिक जितना भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है ये तीनों कंपनी करती है. और इसी के चलते ये जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है काफी हेल्दी है तीनों कंपनी के. बट एक चीज ध्यान रखना होगा कि इनमें एक जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है जो हमने देखा कि आरवीएनएल 5-10 गुना हो गया या राइट शेयर इरकॉन में बहुत बड़ा पैसा जब बना था इलेक्शन के पहले, उस तरह की रैली अब यहाँ आना मुश्किल है. ये जो स्टॉक है अब एवरेज में 10-15% का काइंड ऑफ रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं. इसका जो थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है इसको बार बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर आती रहेगी तो डेफिनेटली इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बेहतर रहेंगे. बट ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज ड्रॉप इन एन ऑर्डर inflow, then it can impact the business growth potential of
RVNL, इरकॉन एंड राइट्स। अगर मुझे तीनों में कोई बेहतर कंपनी चूज करनी होगी तो मेरी फेवरेट RVNL है, जो मुझे लगता है कि रिलेटिवली बेटर कंपनी है, थोड़े प्रॉफिट वहाँ ज्यादा बेहतर आते हैं। The next comment is from संजीव कुमार जी, थैंक यू, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और आपके इस कॉम्प्लीमेंट के साथ हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आपके पास जब अगला जो कोई टॉपिक लेके आए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ लाए, so that we can keep it engaging and add knowledge and add value to your knowledge and at the same time portfolio. The next question is from CR7. I think Ronaldo के बहुत बड़े फैन है. Please share the share price of each and every company. Harsh, if you can share the stock price of all the three companies, please, on a today's closing basis. Yeah, so Titagar is trailing at around 1200 to 1220 rupees. Then you have Jupiter, which is around 492, and Tex Macro is around 211. Harsh, what you can do, you can also share a tentative target price for all these three companies so that it can benefit each and every participant over here. Yeah, so as Sunny sir had earlier told, we have already given Titagar in our Diwali pick, where we have provided, where we have given at 1192, 1172, and the target price is around 1560. Then you have Jupiter, which is currently trading at 492, and you have the target price at 740, and you have Tex Macro at 211, having a target price of 280 to 300 rupees. So having more than 30 to 35% return. Again, I would like to clarify that the holding period for all these three companies is close to 18 to 24 months. ये मत एक्सपेक्ट करना कि आज वेबिनार खत्म हो और कल आपने स्टॉक ले लिया तो ये तुरंत रिटर्न बनेगा, तो थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज मार्केट्स आर वीक, सेंटिमेंट्स आर पुअर एज ऑफ नाउ, सो मार्केट्स आर वोलेटाइल आल्सो, सो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है. What you can do, you can deploy your capital gradually over the period of next 2 months, क्योंकि next 2 months में volatility भी रहेगी till the time we see a union budget from government of India on 1st of Feb. तो थोड़ा सा volatile market रहेगा, gradually buy कीजिएगा आपके portfolio में. Next question is from Prajakta. How to find best stocks for investment or trading? सो प्राजक्ता जी, अगेन आई मीन इसका जो आंसर है काफी लंबा है, इसके लिए हमें एक अलग से प्रेजेंटेशन करना होगा, बट सिंस आपने क्वेश्चन पूछा है तो आई वुड लाइक टू आंसर दैट. आई थिंक अल्टीमेटली जो स्टॉक होता है जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए चूज किया जाता है, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है प्रॉफिट ग्रोथ, जो हम लोग भी हमारे एंड पर ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनमें जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है. अब मैं आपको जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, क्यों एफएमसीजी और फार्मा कंपनीज की हर बार डिमांड रहती है, क्योंकि इनमें जो प्रॉफिट है कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आता है. सालाना अगर आप देखेंगे एचयूएल का जो प्रॉफिट है वो हर साल धीरे धीरे इंक्रीज ही होते रहता है. तो हेंस ये जो कंपनीज है इन्हें डिफेंसिव कंपनीज भी कहते हैं, कि जो इनमें जो प्रॉफिट ग्रोथ है इसमें कोई बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहती है. सिमिलरली इसी पैरामीटर में बैंकिंग सेक्टर आता है, जहाँ जिसका प्रॉफिट पूल बहुत बड़ा है, काफी सारी कंपनीज है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाती है, आईटी कंपनीज भी काफी सारे प्रॉफिट बनाती हैं. तो बेसिकली जो कंपनीज में प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा आ रहा है वो कंपनीज हैं जहां आपको फास्ट स्टॉक में रिटर्न मिलेगा. ये थोड़ा सा आपको एक कदम आगे सोच के चलना होगा. जैसे आज हमने रेलवे वैगन की थीम आपके सामने रखी है, ये कंपनी में भी हमने देखा कि हर्ष ने दिखाया था कि जो स्लाइड में जो प्रॉफिट ग्रोथ है अगले 2 से 3 सालों में 35% केगर से ग्रो हो रही है. So basically, companies which are growing at a rapid clip, those are the companies which you should identify for investment or for a trading purpose. और रही ट्रेडिंग की बात, तो ट्रेडिंग में डेफिनेटली कंपनी कितनी भी अच्छी हो, बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी आपका स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं. तो adhere to your stop losses, and that's the most important part you should take care while trading in any company. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट अ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म? आई थिंक अगेन जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो भी आज हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है कम से कम 18 से 24 महीने का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन रहेगा. उसको ध्यान में रखते हुए ये तीनों स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हो. आरवीएनएल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगेन अमंग द ऑल थ्री कंपनी आरवीएनएल इज रिलेटिवली बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. बट अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़े से वैल्यूएशन जो है
पिछले जो रैली हुई है सभी स्टॉक में, जहां हमने देखा था कि आरवीएनएल 30-35 रुपए ट्रेड हुआ करता था 2-2.5 साल पहले, वहां से बढ़ करके अब 400-450 की रेंज में आ गया है, तो थोड़े से वैल्यूएशन भी अब एक्सपेंसिव हो गए, तो यहाँ से जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है थोड़ी टेम्पर डाउन करना होगा हम सभी को. Companies that will benefit in the railway kavach system, that's the question from Pandey ji. Harsh, would you like to take this question on railway kavach? Which are the companies which are into the railway kavach as of now? Yeah, so you have HBL Power, which is currently into Kavach, and as you see, as you see from since FY22, the company sales has almost doubled from 1200 crores to 2200 crores, and the profit has almost grown by 3 times from 94 crores to 280 crores. So so HBL Power is one company where you can look into consideration in Kavach, and you also have CG Power, which has recently awarded the Kavach order of around 500 to 600 crores. So these two companies should be in focus. Any dips you can add on the following two companies, which is HBL Power and CG Power. But again, just to add on to the Harsh comment, CG Power is a well diversified company, तो सिर्फ जो कवच है उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा, उसमें काफी सारे दूसरे प्रोडक्ट भी हैं जिसका रेवेन्यू शेयर काफी बड़ा है, तो जो कवच का जो बड़ा इम्पैक्ट है वो सीजी पावर में आते नहीं दिखेगा. Anyway, कवच टेंडरिंग इज अंडर प्रोसेस, तो आई थिंक देयर आर मेनी few new players which may emerge winner over the next few months. तो ये जो दो कंपनी है ये तो है ही रडार पर, इसके अलावा इसकी काफी सारी नई कंपनी भी हम देख सकते हैं जिन्हें टेंडर एलोकेट हो सकते हैं अगले कुछ समय में. The next question is from Siddharth ji. Brought balance advantage mutual fund instead of flexi cap mutual fund due to downside risk even after around 10% in Sensex. Siddharth ji, I am sorry, I am unable to understand your question, but let me try to answer that. What you have done, you have purchased balance advantage mutual fund instead of flexi cap mutual fund. I think that's well thought strategy, because what will happen in a balance advantage, you will have mix of debt as well as equity, whereas in flexi cap it is a more of an equity which is spread across large cap, mid cap and small cap. So that's a well thought strategy in a downturn, in a market which are very volatile. In a balance advantage fund, the fund manager will try to deploy more corpus on a debt side so as to generate some fixed return over the period of some time. And whenever the valuations turn comfortable, you will try to allocate more on equity side. So again, the return expectation on a balance advantage mutual fund should be close to 8 to 10% on a average 2 to 3 year basis. Don't expect a very significant great returns from a balance advantage mutual fund, since their certain part of the portfolio is always on the debt side. Sonuji, I think you have shared some portfolio which we have not received. Maybe what you can do, you can okay. So there is another comment. Okay. So yeah, so you have shared the list of stock which is Jio Financial Services, Hudco, NBCC, Bajaj Housing, Rights and Ola Electric. So Sonuji, again I will go stock by stock. Jio Financial Services, it's a long term stock. ये पोर्टफोलियो स्टॉक है. यहाँ अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो 3 से 5 साल होल्ड करना होगा. एज ऑफ नाउ द कंपनी इज अंडर फॉर्मेशन. इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो अभी चल रही है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर. दे आर गेटिंग वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल. थोड़ा समय लगेगा इसमें पैसा बनने में. अगर आपके पास पेशेंस है तो होल्ड कीजिए ये स्टॉक को. आई एम श्योर बीइंग अ रिलायंस ग्रुप कंपनी, आई थिंक दे विल क्रिएट लॉट ऑफ wealth across the financial domain. So I think they remain invested in Jio Financial Services. Coming to Hudco and NBCC, again a PSU play, both on infrastructure side. How Hudco is more on housing side. At the same time, they have recently been appointed as nodal agency for infrastructure financing, whereas NBCC is more of an construction play, predominantly executing government projects across the Delhi. So I think I would recommend you to remain invested in both these companies. Bajaj Housing Finance, again a good company but trading at an expensive valuation. So what I would suggest is that as of now the fair value of Bajaj Finance is close to 110-120 rupees. So एक बार का जो पोस्ट आईपीओ इसमें जो रैली हुई थी, अब मुझे लगता है कि स्टॉक एक साइडवेज रेंज में ट्रेड करेगा अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें.
But if I take a slightly longer term horizon, I think Bajaj Housing Finance can double in the span of next 3 to 4 years. So that's my view, assuming that housing sector will continue to do well. Rights already हमने discuss किया, and again Ola Electric. I think again Ola Electric is a kind of turnaround play, high risk, high return. So many exciting new products are getting launched by Ola Electric. Let's see उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिलता है ये प्रोडक्ट का. इन केस दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट एट अ रैपिड क्लिप, मार्केट शेयर गेन अगर वो कर पाते हैं, क्योंकि बहुत हाइपर कॉम्पिटिटिव ये इंडस्ट्री हो चुका है. हमने रिसेंटली होंडा की ओर से एक्टिवा की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका लॉन्च भी हमने देखा सिमिलर पिछले 1 या 2 दिनों में. तो काफी सारे प्लेयर ये जो मार्केट है इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम ओला इलेक्ट्रिक के जो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे काफी एक्साइटिंग है. इनकी जो बाइक है वो जनवरी या फेब में लॉन्च होने वाली है. एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी एक इंटरनल टेक्नोलॉजी बनाई है फॉर बैटरी. दैट बैटरी विल गो इनटू दिस देयर ओन प्रोडक्ट दैट विल लीड टू द मार्जिन एक्सपेंशन. टर्न अराउंड का प्ले है, थोड़ा सा समय लगेगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न है. हो सकता है कि 90 वाला स्टॉक फिर 70 भी हो जाए, और यू नेवर नो 90 वाला स्टॉक फिर 150-200 भी हो सकता है. तो थोड़ा सा समय देना होगा, थोड़ा सा इसे ध्यान रखना कंपनी के ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच आर द हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. या सो अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्ञान प्रकाश जी. क्या आईआरसीटीसी को भी बेनिफिट हो सकता है? आईआरसीटीसी को कंसिडर किया जा सकता है? अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो रेलवे का जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड है उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट आईआरसीटीसी को होगा, क्योंकि जिस तरह से रेलवे की जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे जैसे नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होगी, जैसे अब हम देख रहे हैं कि वंदे भारत की नई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है, तो जब भी हम जाके आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करते हैं तो उन्हें एक फीस मिलती है, कमीशन मिलता है आईआरसीटीसी को. तो टू दैट एक्सटेंट डेफिनेटली आईआरसीटीसी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा. बट अगर आप मुझे फ्रैंक व्यू पूछोगे तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि आईआरसीटीसी को कोई बेनिफिट है रेलवे कैपेक्स के चलते हुए. और अगर स्टॉक का व्यू पूछोगे तो मुझे लगता है कि कुछ समय तक अब ये रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, 800-1000 के रेंज में आई थिंक इसका फेयर वैल्यू है. तो आई थिंक द स्टॉक विल ट्रेड रेंज बाउंड एज फार एज आईआरसीटीसी इज कंसर्न. Again, the next question is from छोटू जी. डिफेंस पीएसयू स्टॉक पे थोड़ा बताइए. तो अगेन अगर आप डिफेंस पीएसयू में देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से जब से महाराष्ट्र इलेक्शन के आउटकम आए हैं हमने देखा है कि इसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना हुआ है. अगेन विद इन डिफेंस पीएसयू अगर लार्ज कैप में अगर आप बात करेंगे तो कंपनीज लाइक HAL, BEL, भारत डायनामिक, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये कुछ कंपनीज है जहां थोड़ा सा मोमेंटम हमने बिल्ड होते देखा है. अगेन अपॉर्चुनिटी यहाँ लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी है. बट अगर मुझे कोई कंपनी चूज करना होगा डिफेंस पीएसयू प्ले करने के लिए तो मुझे लगता है कि एक छोटी कंपनी है मिधानी को कंसिडर किया जा सकता है, जो कि प्रीडोमिनेंटली एक स्पेशलाइज एलॉय सप्लाई करती है इन सब कंपनीज को. शिपिंग साइड से मजगांव डॉक अच्छा लगता है, और एट द सेम टाइम अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो बीएल को कंसिडर किया जा सकता है डिफेंस पीएसयू के बास्केट से. So there is a question where to find the trending sector in SBI Smart website और Fundamental Screener. तो अगर आप मोबाइल ऐप पर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये दोनों फीचर आपको मिलेंगे. आई थिंक व्हाट आई वुड सजेस्ट कि व्हाई डोंट यू गेट इन टच विद आवर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ओवर फोन and they will explain you in detail how to access all these screeners and everything on SBI Securities mobile app. Again, the next question is on GMDC. So we continue to remain bullish on GMDC. अगर आप देखेंगे GMDC का प्रीडोमिनेंटली जो बिजनेस है लिग्नाइट का है. लिग्नाइट में तकरीबन ये 7 से 8 मिलियन टन का आज वॉल्यूम करते हैं, और कंपनी ने एक अपने लिए एस्पिरेशनल टारगेट रखा है कि 15 मिलियन टन का जो वॉल्यूम है अगले 3 से 4 सालों में करेंगे. और एट द सेम टाइम कंपनी ने ये भी कहा है कि अपना जो नेटवर्थ है, रेवेन्यू है, ये 3 से 4 टाइम एक्सपैंड करेंगे अगले 3-4 सालों में. देखते हैं किस तरह से कंपनी प्ले आउट ये जो स्ट्रेटेजी है इम्प्लीमेंट कर पाती है. रेयर अर्थ मिनरल में भी कंपनी ने अपना एक कारोबार एक्सपेंड करने का
एक स्टेप लिया है, कोल में कहीं ना कहीं फोरे किया है, ओडिशा स्टेट में, प्रिडोमिनेटली गुजरात बेस्ड कंपनी है। तो आई थिंक बने रहिए। आई थिंक ये जो मेटल्स और माइनिंग में जिस तरह से अभी करेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि एक बॉटम ऑफ द साइकिल पर है, थोड़ा सा समय देना होगा, वोलेटाइल स्टॉक है, बट अगेन अगर आप इन्वेस्टेड है जीएमडीसी में तो बने रहिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा जीएमडीसी से ही बन के आएगा। The next question is on Keynes Technology and Reflex, again from Vivek ji. I think again both are good companies. The Keynes anyway is doing well as far as the EMS space is concerned. I think one should stay remain invested in Keynes. But one has to keep in mind that right now the valuation of all these EMS companies have turned very expensive. And on a relative basis, we feel that Sirma is the one company to be in where the valuations are relatively cheap. काफी अच्छे नंबर से क्वार्टर में आए थे, तो सिरमा इज द वन कंपनी विच यू कैन कीप इन माइंड. Moving on to the Reflex, again Reflex is a more of a turnaround story. So what we have seen is that in the Reflex, the company has been consistently generating profit of close to 100 crore over the on an annual basis, and now the market cap is close to 6,000 crore. I think again post the huge rally which we have seen in Reflex during the last maybe 6 to 7 months, I feel now the stock is poised for a sideways moment. So I think again both Keynes and Reflex good businesses, but trading at an expensive valuation. So I feel that both the stocks should move on a sideways fashion for the next 3 to 6 months. The next question is on CRM Recycling. Let me check this company. So again, CRM Recycling is an SME company, not a mainboard company. Let me check. So again, a very small business seems to be. So actually, we don't track such a small SME based companies, but within the recycling space, the companies which we like are basically Gravita and Pondi Oxide, JG Chemical. जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ बने रही है, मुझे लगता है कि वहाँ प्रॉफिट इंक्रीज होने का भी अच्छा स्कोप है, और एक सेफ्टी भी आपको मिलेगी इन दिस करंट मार्केट. So I think Gravita, Pondi Oxide and JG Chemical, these are the three names which we like among the recycling as an industry. NTPC, कल्याणी जी का सवाल है, why it is in a downtrend. Again, we continue to remain bullish on NTPC. I feel the fair value of the business is close to 460 rupees if you have got an investment horizon of 12 to 18 months. So I think you should stay remain invested in NTPC. It's one of the largest company as far as power generation is concerned, and looking at an robust expansion plan on renewable as well as on the nuclear side. I think the stock has got a good future going forward. The next question is from Rahul Nikamji, Techno Electric Engineering, EKC and Optimus review. Again, we are bullish on all the three names, whether it is the Techno Electric. So we have seen a decent correction also of late in the Techno Electric. It's a good play on data center. EKC, again a play on basically a cylinder. And at the same time, Optimus, where we have seen a tie-up with a Croning for the manufacturing of glasses for mobile and other electronic devices. So stay remain invested in all the three names. It's a good, all the three companies are good to hold for a medium to long term perspective. Again, the next question is from CR7. I have an equity share of Tata Investment since last 2 years. What should I do with it, or wait or withdraw in brief future of the share? Again, Tata Investment is a kind of a mutual fund wherein you get most of the share from the Tata Group. And what I would suggest is that at a current juncture, you should stay remain invested. The reason being that of late we have seen sideways movement to correction in most of the Tata stock. But as we move forward, I am sure the future is bright for all the Tata Group businesses. So it's a more of an it's an holding company. There is no business of its own as far as Tata Investment is concerned.
So every time whenever there is a bull run, you will see a spike in the stock price of Tata Investment, which is directly correlated to stock price of its underlying investment. So stay remain invested. I think it's a portfolio stock rather than looking it on a daily basis. One should hold this stock from a long-term perspective. The next question is from Anuradha ji. Please suggest which sector or stock should perform in the next up move. I think Anuradha ji, what we feel is that hotel as an industry should do well. Usually the December quarter is a good quarter for hotel and alcohol and liquor companies. So few companies within the hotel sector which we like are Chalet Hotel, EIH, Sami is a kind of turnaround, APJ Surinder, again a hotel company trading at a very reasonable valuation. Indian hotel में हमने एक already अपमूव देखा है, तो maybe in case due to correction the stock, if you are able to collect that stock close to 700 720 band, then that will be a fair risk reward to be in. Railway wagon which we have discussed today, again we are bullish on Titagarh wagon, Texmaco, Jupiter, so that can be looked upon. Ethanol is the one thing where we are bullish on. We believe that very soon we may see some price increase on ethanol front, and that can be rided either through Praj Industry, which is an engineering company, or through an ethanol producers like Awadh Sugar, Gulshan Polyol. Transformer is the one sector where we are bullish on. So few companies like Silchar, or for that matter Voltam, can be looked upon. EMS we have discussed. Sirma we are bullish on. Optimus. Electric vehicle side, JBM Auto, Electra. On real estate side, we like Raymond, Suntec Realty, Arcade. On fashion side, Arvind Fashion. So these are the few stocks which we are bullish on from a short to medium term perspective. Again, the next question is from Rahul Nikamji, data center management companies in India. So again, data center, there are many way to play ride on a data center theme. A case in point, Hitachi Energy. I mean, they are providing the infrastructure for data center, right? So that is the one play. Then there is a company known as Anantraj Industries, which is hosting a data center business under the real estate arm. So that's the reason we have seen a very good rally in the Anantraj also. At the same time, there is one small company known as TCC Concept. It's a micro cap company. They are also building up a data center business under their fold. So again, power and cable. There are many smaller pieces which will benefit out of the data center. NetWeb, for that matter, they are providing servers and all those stuff. So again, a whole lot of companies that are that can be ridden upon based on the data center theme. I think now we are running out of time. I think, and I think we have answered most of the question. Only few remaining questions are NTPC Green Energy, Tata Technology, and Stylem. So and NHPC. So I will try to wrap up this session by giving answer to the remaining 4 questions. First, Tata Technology. Again, I continue to remain neutral on the stock at a current juncture, because most of the client base of Tata Technology is from a automobile sector, and we are seeing some slowdown as far as European automobile industry is concerned. So I feel the stock will continue to trade in a range-bound fashion for a next quarter or two. So neutral kind of view as far as Tata Technology is concerned. NTPC Green, again a long-term positive, but short-term I feel the stock is expensive. So should again trade range-bound. So in case you got a long-term investment horizon, so maybe buy on dip is something which is recommended on NTPC Green. In case you are able to collect the stock close to 110 or close to IPO price and hold for a long-term perspective, 13 to 15% kind of return is something one can expect from NTPC Green Energy. Next question is from on Stylem. Again, Stylem, the company has delivered a very fantastic return over the period of last 1.5 year, and that company was under our coverage. So right now the company is generating profit of close to 130 crore, and we believe FY25 is the year where it will be a kind of flattish year for the company. So no firework expected from a Stylem on financial performance side for next quarter or two. But if I take a longer term horizon, we believe that this company has got a potential to deliver
profit in the range of 150 to 160 crore over the period of next 3 years. So short term, I feel all the positive are in a price. Maybe for few quarter the stock can consolidate, and if you are a long term investor, you can stay remain invested. But if you are a short term investor trying to catch on to the rally, what I would suggest is that you can do a partial profit booking in SkyLam also. The next question is on NHPC. Again, NHPC, we feel the fair value of the business is close to 110 100 rupees. So keeping that price target in mind, you can stay remain invested. Yeah, thank you all for attending this wonderful session on railway wagon, and thanks for your compliment and feedback. I hope that we were able to add value to your domain, and at the same time look forward to your participation in our next webinar. Thank you and have a good day. Thank you, Harsh. Thanks, Tej.